Assalamualaikum everyone, this is Rabia Manzoor. The purpose of today's video is to provide you a series of lectures, which is basically the lectures of statistics for second year part 2 students, those who are preparing themselves for the board of second year. And due to this quarantine, the purpose is to provide you online lectures that are related to your textbooks of statistics. So if you can see, I have this PDF of the second year part 2 statistics book, and I'm going to start it with your first chapter, which is chapter number 10. And the title of this chapter is Normal Distribution. So you can see we are starting with a bit introduction. These are the first three probability laws. Uh, Before discussing it, I'm going to start with the introduction of normal distribution. This lecture is an introduction to normal distribution, so I'm going to tell you what is normal distribution. Normal distribution is basically a distribution of continuous random variable. तो दरअसल अगर आपका वेरिएबल कंटिन्यूस नेचर का है और आपकी जो उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी, या आप ये कह सकते हैं कि उसके लिए जो आप डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल क्योंकि नाम से पता लग रहा है कि मतलब इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है कि वो नॉर्मल बिहेवियर शो करती हो। सो इट्स वी विल डिस्कस इट its normal nature further, and it's a distribution of a continuous random variable. जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है तो सबसे पहले बात आती है उसकी पीडीएफ की। नाउ व्हाट इज पीडीएफ? पीडीएफ इज बेसिकली an abbreviation of probability density function let me clear it. Okay, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको आपके वेरिएबल की किसी भी डेटा पॉइंट यानी कि x जो हमारा मेन वेरिएबल है उस डेटा पॉइंट पे उसकी प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड करता है. सो इट्स अ फंक्शन or a formula which provides the probability of random variable, which is obviously a continuous random variable. Okay, I'm sure it is clear now. ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो कंटिन्यूस है, और उसका जो पीडीएफ है वो एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जो कि x है, और जिसकी रेंज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है. यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो आप कोई भी नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव वैल्यू के साथ ले सकते हैं. यानी कि x की कोई भी वैल्यू हो इसके दरमियान, और आपको अगर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और अगर वेरिएबल कंटिन्यूस है और वो नॉर्मल है तो आप जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ये फार्मूला होगा. पीडीएफ को स्मॉल एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला है 1/σ√2 पाई e raised to power -1/2 x माइनस म्यू और सिग्मा होल स्क्वायर. अब ये बहुत बड़ा फार्मूला है. चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ. अगर आप देखें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जैसे कि दिस इज टॉपिक नंबर 10.1.1. A continuous random variable x is normally distributed if and only if its probability density function is this one. So आप देखें कि आपके पास f of x एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन है जिसका फॉर्मूला आपको बुक में प्रोवाइड किया गया है. अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले में है क्या क्या. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे पाई है.
ये पाई वही कांस्टेंट है जो आप मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वैल्यू है 3.1415। अगर आप नीचे देखें तो आपको पाई की वैल्यू प्रोवाइड की गई है। आप कैलकुलेटर से भी आसानी से निकाल सकते हैं, वहाँ पे पाई की ऑप्शन अवेलेबल होती है। अब ई की बात करते हैं। ई एक और कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.783 बेसिकली, सॉरी। सो ये भी एक कांस्टेंट है जो आपके कैलकुलेटर्स में अवेलेबल होता है। इसके अलावा दो तीन चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं यहाँ पे, दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, एक है सिग्मा और एक है म्यू। सो हम ये देखते हैं कि सिग्मा और म्यू क्या है। किसी भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में उसके पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स वो अननोन होते हैं जो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि वो उसके अननोन की वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स हैं। इट हैज टू पैरामीटर्स। So normal distribution has two parameters. One is mu and other one is sigma square. Mu is the mean, is called mean, and sigma square is called variance. अगर आप लोग देखें वेरियंस, सिग्मा स्क्वायर अगर वेरियंस है तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, जिसको हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं। राइट, दिस इज द आप अगर सिग्मा स्क्वायर की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो वो वेरिएंस होगा, और अगर आप इसी का स्क्वायर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर एक रैंडम वेरिएबल x जो अप्रोच कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो इसको लिखा जाता है x अप्रोचिंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल N लिख लें या स्मॉल n लिख लें, with the random variable x and its parameters which is mu and you can write sigma square or sigma. It depends कि आपको क्या चीज़ प्रोवाइड की गई है सवाल में। Okay, so this is the representation of normal distribution in mathematical form, यानी कि इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। This is the representation. This is the representation. स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूँगी कि इसको जितना मैं सिंपलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ उतना बेटर है। सो दिस इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की होती है। इसका पीडीएफ जो होता है वो आपके पास ये होता है। इसका रैंडम वेरिएबल x है जिसकी रेंज -∞ से +∞ तक है, और इसके दो पैरामीटर्स हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, यानी कि मीन और वेरिएंस। अगर इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, इसको सिग्मा लिखा जाता है। तो समटाइम्स कुछ बुक्स में सिग्मा से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ बुक्स में आपके पास सिग्मा स्क्वायर लिखा जाता है यानी कि वेरिएंस को इस्तेमाल किया जाता है। ये वेरी करता है आपके पास। अगर हम टेक्स्ट बुक की तरफ जाएं तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के टॉपिक में आपको पहले डेंसिटी फंक्शन प्रोवाइड किया गया है, फिर आपको पैरामीटर की वैल्यूज बताई गई हैं, और कांस्टेंट जो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो बताए गए हैं। और वो कह रहा है कि x इज़ द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x। अगर एक रैंडम वेरिएबल है जिसको कैपिटल x से रिप्रेजेंट किया गया है तो उसकी वैल्यू को स्मॉल x से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक और चीज़ ये है कि इफ़ योर रैंडम वेरिएबल इज x, then small x is the
value of that random variable. So this is your random variable, the representation of random variable. This is called the value of random variable. It is called value, और इसको ordinate भी कहा जाता है. So these are the terminologies which your textbook is showing, and मैंने कोशिश की है कि इसको जितना simpler form में आपको बता सकूं मैं बताऊं. नेक्स्ट है शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे कि नाम से जाहिर है ये इसकी शेप एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल फॉर्म में होती है. अब नॉर्मैलिटी का क्या मतलब है? नॉर्मैलिटी का मतलब ये है कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो जो बिहेवियर उसके लेफ्ट साइड पे ग्राफ का है वही उसके राइट साइड पे ग्राफ का होगा. अगर आप देखें तो आपके सेंटर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो रैंडम वेरिएबल होता है एक्स एक्सिस पे जो एक्स है और वाई एक्सिस पे इसकी डेंसिटी है विच इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो अगर आप देखें कि म्यू जो है उसका मीन होता है, मीन हमेशा सेंटर में होता है. अगर मैं मीन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूं तो लेफ्ट और राइट साइड की जो बेल्स हैं यानी कि उसकी शेप है, कर्व है, वो एक जैसा बिहेवियर शो कर रहा है. दिस इज व्हाट वी कॉल नॉर्मल बिहेवियर और सिमेट्री, सिमेट्रिकल बिहेवियर और बेल शेप्ड कर्व. सो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ. This graph is basically the graph of normal distribution, and it represents that the sorry, I move it to the downward. Okay, so this graph shows the shape is it is a bell-shaped, symmetrical, or bell-shaped, or you can say normal. Okay, I'm sure it is clear now. Now read it from the textbook. Alright, the next topic is shape of the normal distribution. You can see figure number 10.1. This is the graph of normal distribution, and you have mu, that is mean, at the center. And if you see, it clearly represents that the curve from the left side of its mean is equals to the curve at the right side of its mean. The graph of the normal probability density function is called a normal curve. As can be seen from the definition, the probability density function for a normal random variable has a unimodel. Unimodel means it has a single peak, symmetrical, and a bell-shaped distribution. So you can say it a bell-shaped graph or a symmetrical graph or a normal curve. Alright, so this is all about the journal introduction and the probability density function or the formula, the parameters, its representation, the representations of normal random variable and its value, which is ordinate, and the shape of the normal curve. This is all we have in our lecture number 1. For the further clearance, it is better to read the first page of your textbook, which is the introduction of normal distribution. In our next lecture, we will talk about its properties. I hope कि जितना मैंने आपको काम बताया है वो आप लोगों के लिए आप लोग को easily समझ आ गया होगा. And हम next lecture में इसकी properties discuss करेंगे. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.